Hello, good morning student. See, welcome back to our e-learning session and this is your first lecture of chapter number 7 statistics. See, in our last session we complete our chapter number 5 completely with your doubts. Okay, first 1 to 17 example and then A to D exercise doubt and then E and F exercise doubt. We complete full chapter. Okay, now the next chapter is 6th chapter, but it is a very big chapter and that's why we are right now we are skipping that because that is important chapter and that chapter we will discuss in our next session, that means in our after the second term examination. Okay, because it's a most important chapter for the 12th standard, that's why we will discuss later on. Now we move forward to our next chapter, that is very small chapter as well as mostly theory chapter. We will discuss that chapter number 7, that is sampling method. Okay, what is sampling method, that we will discuss in this lecture, in this chapter. See, first of all the theory. See, this is almost a theory lecture and that's why I told you whenever we are discussing about the theory, we are discussing in our two languages, that is English as well as in Hindi. So, we are starting this chapter number 7, sampling method. First point is population and sample. Meaning, important, see, in this chapter, theory is important, that's why meaning, characteristics, all these things, whatever the points are there, we have to remember that point. So you have to learn that also. First of all, I am explaining you here and then you have to learn these all the topics, all the points. See, first meaning, a set or group of all units or items under the study is called a population. What is population? हमको जिसका स्टडी करना है, अगर हम कहीं पे जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई ये इतनी साइज का इतना इतना हमको स्टडी करना है. स्टडी करना मीन्स व्हाट? आई वांट टू नो अबाउट दैट मीन्स आई वांट टू स्टडी. हियर अ सेट और ग्रुप ऑफ ऑल द आइटम्स, ऑल द यूनिट्स हियर अंडर द स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन. एक एग्जांपल देता हूं. अगर मैं स्कूल में आता हूं और मैं बोल रहा हूं कि स्कूल के प्रिंसिपल को बोल रहा हूं कि मेरे को 11th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों का, जितने भी 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स में जितने भी बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट्स का मेरे को ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब मेरे को उसमें से कुछ स्टडी करना है फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स. ओके, सो हियर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स क्लास इज माय पॉपुलेशन बिकॉज आई वांट टू स्टडी अबाउट दैट. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन. Second, a set or group of units selected from the populations on the basis of some defined criteria is called a sample. दूसरा एग्जांपल सैंपल. सैंपल किसको बोलते हैं? जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ चीजें निकाल लो कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर, उसको बोलते हैं सैंपल. सैंपल मींस व्हाट? सी, अगर ये एग्जांपल जो हमने लिया वो कंटिन्यू करेंगे तो क्या करेंगे कि 11th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों में से जिस बच्चे के 10th स्टैंडर्ड में 70% एंड अबव है वो मेरे को चाहिए. दैट मींस व्हाट इज माय सैंपल हियर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स, द स्टूडेंट्स हुज परसेंटेज is more than 70 in 10th standard, I want that students and that is my sample. Right? What is sample? अगर कोई ग्रुप में से जो पॉपुलेशन के हम स्टडी कर रहे हैं वो ग्रुप में से कोई क्राइटेरिया के बेस पर हम अगर किसी बच्चे को या फिर किसी आइटम्स को अगर हम निकाल देंगे वो पॉपुलेशन होगा. सी, इन आवर डे टू डे लाइफ if we are purchasing anything, then first of all we see all these things and from that all these things we are selecting one or two, right? That is called also all the things, seeing all the things, that is called population, and then selecting from them one or two, that is called sample. Okay, see, agar suppose we want to study the IQ level of students in 12th standard of Gujarat board. The example is given now. Suppose we want to study the IQ level of the 12th standard students of Gujarat board, then all the 12th standard students of the Gujarat board is our population. Here I already give you the example. Here the another one example is given. I am just reading that example. Here
IQ level of 12th standard student of Gujarat board, we want to study about that. And that's why all the students of 12th standard is our population. If we select 1000 students from all the 12th standard students of the Gujarat board based on some criteria, then set of those 1000 students becomes our sample. That is our sample. 1000 students is our sample. All the students, that is more than 10,000 or more than 15 or 20,000, all the students of 12th board, 12th standard Gujarat board are the population. From that, on the basis of some defined criteria, if we are selecting 1000 students, that is our sample. Selection of sample is often used in day-to-day life. I told you that whenever we are purchasing any of the thing from the market, that is also selection. Okay, here that is also in the selection is also selection of sample is often used in the day-to-day life. Before purchasing vegetables or fruits, in the shop more fruits are and many fruits and many vegetables are there, and from them we have to select 1, 2, 3, 4 or 1 kg, 2 kg, whatever, right? So before purchasing vegetables or fruits, we select and inspect a few from the whole lot of the vegetables and fruits that shopkeeper has, right? All the vegetables or fruits this shopkeeper has is the population, and the few selected vegetables and fruits is a sample. That is also our day-to-day life example. Now, a sample can be selected with or without replacement from the population. The second thing is we are selecting the sample from the population is with or without replacement. What means of that? अगर हमने अगर हम से फॉर एग्जांपल वी आर परचेजिंग अ टोमेटोस, राइट? हमने टमाटर परचेज करने के लिए गए और बहुत सारे टमाटर हमको वहां से 1 kg लेने हैं. हमने 4, 5, 10 निकाल लिए, मगर 10 निकालने के बाद पता चला कि जो 10 में एक है वो बिगड़ा हुआ है, हमने सिलेक्ट कर लिया है मगर वो अच्छा नहीं है, तो हम वो क्या करेंगे, वापस रख देंगे और दूसरा नया ले लेंगे. दैट मीन्स व्हाट? विथ रिप्लेसमेंट. जो हमने सिलेक्ट किया है उसको वापस रख के दूसरा सिलेक्ट करो, दैट इज विथ रिप्लेसमेंट. और विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स व्हाट? जो भी सिलेक्ट किया है वो डायरेक्ट उसको दे दो, शॉपकीपर को दे दो, वो वेट करके हमको दे देगा. दैट मीन्स विद और विदाउट रिप्लेसमेंट. Here a sample can be selected with or without replacement from the population. A sample in which each unit is selected from the populations after replacing the unit selected either in the population is called sample with replacement. अगर कोई हमने परचेज करने के मतलब कोई हम सिलेक्ट करने के बाद उसको वापस रख देंगे और फिर से सिलेक्ट करेंगे तो वो विथ रिप्लेसमेंट हो जाएगा. और अगर हम डायरेक्टली सिर्फ सिलेक्ट ही कर लेंगे और रख देंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा. वही वो बोल रहे हैं, व्हाट इज विथ रिप्लेसमेंट? सी, आई एम रीडिंग अगेन. A sample in which each unit is selected from the populations after replacing the unit selected either in the population is called, earlier in the population is called a sample with the replacement. A sample in which each unit is selected from the populations without replacing the unit selected earlier in the population is called sample without replacement. I told you that whenever we are purchasing, whenever we are selecting, one we select or not replace and then not again select, that is called without replacement. Or if we are selecting and replacing and then selecting, that means with replacement. Okay. Similarly, if the units are selected simultaneously from the population, then it is also a sample without replacement. एक साथ में हमने सब कुछ एक साथ परचेज कर लिया है, सिर्फ परचेज ही किया है, सिर्फ सिलेक्ट करके रख दिया है, ये बोल रहा है ये ले लो, या फिर शॉपकीपर को बोल दिया 1 किलो दे दो, वो कोई भी सिलेक्ट करके दे देता है. व्हाट मींस ऑफ दैट? दैट मींस आल्सो दैट इज अ सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट? ओके, नाउ दिस इज पॉपुलेशन एंड सैंपल. मीनिंग इज ओवर. प्लीज हियर after each and every topic I am giving you here 1 minute. Please read it carefully and remember that, and on the basis of that we will discuss our next topic. So please read 1 minute the meaning 1, 2 and 3 paragraph. Read that.
Okay, I hope you read that. Meaning of sample and population. Now the population inquiry and sample inquiry. See, पहले हमने मीनिंग देखा कि किसको पॉपुलेशन बोलेंगे, किसको सैंपल बोलेंगे. नाउ हम उसकी इंक्वायरी कैसे करेंगे, पॉपुलेशन की इंक्वायरी कैसे होगी और सैंपल की इंक्वायरी कैसे होगी, उसमें से हम सैंपल की इंक्वायरी कैसे कर पाएंगे पॉपुलेशन की इंक्वायरी में से. सी दैट फर्स्ट there are two methods of collecting information or data about the population under the study. हम अगर पॉपुलेशन की स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी पॉपुलेशन का स्टडी करना चाहते हैं, there are two methods for that, right? Which one? The inquiry in which information is collected from the each and every unit of the population is called population inquiry or census survey. See here, first point here they given that the inquiry in which information is collected from each and every unit of the population. एक से एक यूनिट का पॉपुलेशन को हमको इंक्वायरी करनी है तो हमको उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इंक्वायरी और सेंसस सर्वे, राइट. एंड द सेंसस सर्वे कंडक्टेड एवरी 10 years in India in example of the population inquiry. पॉपुलेशन इंक्वायरी में हम क्या करते हैं, हर 10 साल के बाद, मतलब 2010, 2020, 2030, after each and every 10 years, here in this year, that is in 2021, here the sample survey or you can say census survey is start. What means of that? Last 10 years में कितने की डेथ हुई है, कितना न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, हम ये सब जानना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे सेंसस सर्वे. और वो सेंसस सर्वे मीन्स व्हाट, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन इंडिया आफ्टर ईच एंड एवरी 10 years. This census survey is completed by the government, is conducted by the government. That means here the census survey conducted every 10 years in India is the example of the population inquiry. हर घर पे जाकर जो वर्कर्स होते हैं वो हर घर पर जाकर कितने बॉर्न बेबी है, कितने नए हुआ है, कितने के डेथ हुआ है, वो सबका इंक्वायरी करते हैं, माउथ टू माउथ इंक्वायरी करते हैं और उससे हिसाब से कितनी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट आइडिया आ जाएगा हमको कि इंडिया में 10 साल में कितनी आबादी बढ़ी या घटी. दैट इज कॉल्ड सेंसस सर्वे. सपोज द स्टडी इज अबाउट टू मार्क्स ऑफ 11 and 12 standard students of a particular school and we conduct marks and we collect marks of each and every 11-12 standard students of the school, then it is population inquiry. If I want to study about the commerce stream, that means what, 11 standard and 12 standard students of all the class of each school, one school, right? Then I am collecting all the results of 11 and 12 standard students from the school, that is called population inquiry. Here 11 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड में जितने भी बच्चे हैं एक स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम में, वो सभी के रिजल्ट्स अगर मैं कलेक्ट करूंगा फ्रॉम द स्कूल्स, दैट मींस हियर दैट इज अ पॉपुलेशन इंक्वायरी. सभी का मतलब पॉपुलेशन, और वो मैं इंक्वायरी कर रहा हूं क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को उसमें से कुछ सैंपल चाहिए, मगर उस सैंपल के लिए पहले पॉपुलेशन चाहिए, और पॉपुलेशन क्या है हमारा, सभी बच्चों के रिजल्ट्स, राइट. सो दैट इज पॉपुलेशन इंक्वायरी. मैं स्कूल को जाकर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को ये सर्वे करना है, मेरे को ये करना है, तो वो मेरे को सपोर्ट करेगी, स्कूल मेरे को सपोर्ट करेगी और मैं उसके पास से क्या कलेक्ट कर पाऊंगा, पॉपुलेशन इंक्वायरी. दैट मींस व्हाट, ऑल स्टूडेंट्स 11th and 12th standard, all the students results of 11th and 12th, right? Okay. Inspection of all the votes cards during a particular election is another example of population inquiry. All the votes cast, which from which cast the voter is come from. That's why inspection of votes cast during the particular election is another example of the population inquiry. That is also population inquiry, we can say that. Now the inquiry in which information is collected from the few units selected from the population is called sample inquiry or sample survey. अगर हम ये एग्जांपल कंटिन्यू करें कि 11 12 स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं, उसका स्कूल का रिजल्ट हमने स्कूल के पास से लिया, उसमें से मेरे को जो वीक स्टूडेंट है उसके रिजल्ट्स पहले चाहिए. क्यों, मेरे को उस पर मेहनत ज्यादा करनी है. मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को
जितने भी इस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सभी पास होने चाहिए, एनी हाउ, कैसे भी करके। जो क्लेवर है वो तो अपने आप वैसे भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पढ़ाएंगे तो भी वो पास हो जाएंगे, मगर जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो वीक स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में करेक्ट करना चाहूँ तो दैट इज मींस व्हाट, दैट इज माय सैंपल सर्वे फ्रॉम द 11th 12th स्टैंडर्ड ऑल द स्टूडेंट्स। I want to study about the weaker students of the class and मैं वही सैंपल में से वो क्राइटेरिया के बेस पर मैं पॉपुलेशन में से जितने भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है, दैट मींस लेस देन 40 और 50% स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स मार्क्स आई एम कलेक्टिंग and I am concentrating on that to pass them students, how to pass them students, their students. Okay, suppose the study is analyzed. See, that is called a sample survey or sample inquiry. Suppose the study is to analyze spending habit of students of a particular college. If we collect the information of the spending habit of a few students selecting with definite criteria or that college, then it is an example of sample survey, sample inquiry. If we want to know about the spending habit of the college students, जो कॉलेज के बच्चे वो हर दिन कितने पैसे खर्च करते हैं, अगर हमको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहले क्या करेंगे, तो कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्वायरी सभी को पूछेंगे तो वो पॉपुलेशन इंक्वायरी है, और उसमें से कोई क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि भाई मोर देन 1000 रुपीज पर डे। ऐसे बच्चे कौन से हैं जिसने हर दिन 1000 से ज्यादा 500 से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, स्पेंड किए हैं, वो ऐसे बच्चे ही चाहिए। तो उसमें से ऐसे बच्चे, टोटल पॉपुलेशन में से ऐसे बच्चे की इंक्वायरी लाएंगे, वो होगा हमारा सैंपल इंक्वायरी, राइट। सो इट्स कॉल्ड अ सैंपल इंक्वायरी। टेस्टिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सैंपल सर्वे। अगर आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाओगे, ब्लड बैंक पे जाओगे कि सर मेरे को मेरा ब्लड ग्रुप चेक करवाना है, तो वो क्या करेंगे, वहां पे जाओगे तो एक छोटी सी सुई लगा देंगे यहाँ पे हाथ पे, और लगाने के बाद वो ड्रॉप ऑफ ब्लड वहां पे वो एक स्टिक पे ले लेंगे और उसके हिसाब से वो उसका ऑब्जर्वेशन करके बोलेंगे कि आपके पूरे बॉडी में कौन सी ब्लड ग्रुप है, A+, B+, वॉट एवर, O+, AB+, वॉट एवर, नेगेटिव, पॉजिटिव, what is your blood group, that is depends on only one drop of your blood of the body, that is also called a sample survey, उसको भी हम sample survey ही बोलेंगे। okay, the procedure of selecting a sample from the population is called sampling। हमको क्या करना है, sampling methods, हमारा ये चैप्टर्स का नाम है sampling methods। तो sampling किसे बोलेंगे, टोटल पॉपुलेशन में से हमको कोई भी किसी दो मेथड से अगर कोई भी सैंपल सिलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। दैट मींस द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। ओके, सो हियर अगेन one next topic, that is population inquiry as well as the sample inquiry is complete. Now read these. I am giving you here 1 minute for that. Please read 4 paragraphs. What is population inquiry and what is sample inquiry? Read that. और भी डे टू डे लाइफ में हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिसको हम बोलेंगे दैट इज अ पॉपुलेशन इंक्वायरी एंड दैट इज वन फ्रॉम दैट इज अ सैंपल इंक्वायरी। Okay, so you have to think about that, which one is the population inquiry and which one is the sample inquiry, and write down in your fair book the examples of population inquiry as well as sample inquiry. Think about it. आपको उसके बारे में सोचना है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है, आप जहां भी जाते हो वहां से आप क्या करते हो, मतलब वो वहां पे पॉपुलेशन कौन सा है, और वहां पे अगर आप कुछ सिलेक्ट कर ले ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, देन व्हाट इज द सैंपल दैट यू हैव टू राइट इन योर फेयर बुक। In your example book, you have to write down first the meaning of population, then the meaning of sample, then population inquiry, meaning of population inquiry,
meaning of sample inquiry, then the example of all these things, meaning as well as example of population, sample, population inquiry and sample inquiry. You have to write down all these things from your day to day life. रेगुलर रूटीन लाइफ में से आपको सिलेक्ट करना है व्हाट इज आवर पॉपुलेशन, व्हाट इज आवर सैंपल, व्हाट इज पॉपुलेशन इंक्वायरी, व्हाट इज सैंपल इंक्वायरी एंड राइट डाउन इन योर फेयर बुक. तो इस चैप्टर के हिसाब से हमारे एग्जांपल्स नहीं है. सी यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में कोई एग्जांपल नहीं है. ये थियरी चैप्टर ऑलमोस्ट थियरी चैप्टर है, फुल थियरी चैप्टर नहीं है मगर ऑलमोस्ट थियरी चैप्टर है. तो थियरी चैप्टर में हमको थियरी लिखनी है और थियरी में क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग and then example, then population inquiry and sample inquiry meaning and then example. Okay, so read that first. The second topic, 7.2 topic, population inquiry and sample inquiry. So I hope you read that. The first topic, that is population sample, and the second topic population inquiry and sample inquiry. Now the next topic is need for sampling. What is the next topic? Need for sampling. We often use sampling in our real life. That is, I already give you the homework about that. You have to find out your day-to-day life sampling. Population inquiry, sample inquiry and the sampling, right? What is sampling? Procedure of selecting a sample from the population is called sampling. Okay, the quality control, see the example is given for the sampling now, and not in our day-to-day life but in our the business or factory life. See the example, the quality control department of a factory randomly selects a few units from the total production to check the quality of the units produced. All the units are there in the factory. If I am going to the factory, in any factory, then all the units are produced and some finished goods are also there, some raw materials are also there, and some half produced goods are also there. That is called work in progress goods, right? All the goods are there. From all these goods I am taking a sample, or we can say that quality control department officer take some samples from raw materials, from WIP, that is work in progress goods, and from the finished goods. They are taking some samples, and on the basis of the samples or on the basis of the inquiry or on the basis of the production of all the production, here they are selecting some goods, and then except that control is there. What means of that? The quality control department of a factory randomly selects a few units from the total production and check the units. All the units are checking and then given a certificate about the goods are okay or not. Okay, that means here the production department, the quality control department of a factory randomly select a few units from the total production to check the quality of the units produced. The total production of that factory is considered
as a population and a few units selected for determining the quality becomes the sample. जितने भी प्रोडक्ट फिनिश गुड्स है, जितने भी डब्ल्यूआईपी गुड्स है, जितने भी रॉ मटेरियल गुड्स है, वो सभी होगा पॉपुलेशन, क्योंकि सर्वे करने जा रहे हैं तो सर्वे करने के लिए जो भी है सब कुछ है वो पॉपुलेशन है, जिसका सर्वे कर रहे हैं वो सब पॉपुलेशन है। और उसमें से अगर कुछ few items, few units are taking for as a sample, that means is a sample, okay? And if we are selecting that and then check it, then it is called sample survey. तो उसको सैम्पलिंग भी बोलेंगे। पहले कोई कलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग, और उसके बाद उसका हम चेकिंग करेंगे, दैट मींस डिपार्टमेंट स्टोर के कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होगा उसको वो चेक करेगा, उसको बोलेंगे सैंपल सर्वे। पहले सिलेक्ट करेगा उसको बोलेंगे सैम्पलिंग, उसका सर्वे करेगा तो उसको बोलेंगे सैंपल सर्वे। द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग सम मिल्क फॉर द डिटरमाइनिंग द फैट फ्रॉम द मिल्क ब्रॉट बाय द milkman to the dairy, checking the blood sample of few patients suffering from a particular disease to detect the cause of the disease, etc. are the other examples of the sampling. अगर डेयरी मैन आकर किसी के डेयरी के दूध के पास उसमें से वो फैट कितनी है वो चेक करेगा। आपने 15 लीटर या 50 लीटर दूध दिया है, दैट मींस मिल्कमैन ने डेयरी में जाके 50 लीटर दूध दिया, तो वो 50 लीटर का वो होगा 50 लीटर उसके लिए सैंपलिंग। यस, नो, व्हाट इज दैट इज आवर पॉपुलेशन। डेयरी के लिए जो मिल्कमैन ने 50 लीटर दूध दिया है वो क्या होगा, वो होगा उसका पॉपुलेशन। मगर उसमें से थोड़ा बहुत मिल्क लेकर क्या करेंगे, वो उसका सैंपल होगा, वो उसको चेक करेंगे कि उसमें कितनी फैट है, अच्छी है तो अच्छे पैसे मिलेंगे, नहीं है तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। दैट मींस डेयरी पेज द अमाउंट और एनी कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फैट, दैट इज आवर क्राइटेरिया, एंड नॉट फॉर 50 लीटर्स, only from few 500 grams or 1 liter is taken from that as a sample and find out the how the fat is there in the milk and then pay on the basis of the fat. As well as whenever some patients are there in the hospital, some patients are there, they are taking what is the disease are there. That means if we want to know the disease of the patients, then here what we have to do, we have to take a sample of blood from their body and then check what is the blood is what we have to check, or the doctor has to check what the blood, and on the basis of that the patient's disease can find out. That is called also sampling. Okay, these are the examples of sampling. Other examples of sampling, so first of all read that need for sampling, one paragraph and very easy. It is our day-to-day life. Population and sample survey is our day-to-day life, and that's why here it is very easy to understand. So please read that and then move forward to the next page. Now see that sampling. Sampling is inevitable in following situation. हर बार हम सैंपलिंग नहीं कर सकते। अगर हम किसी के पास गेहूं लेने जा रहे हैं तो गेहूं की जो गुनी है उसमें से हम थोड़े बहुत निकाल कर देखेंगे हाथ में और देख लेंगे कि दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। पूरी जो बगी है वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, पूरी जो बैग है उसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन, और उसमें से कुछ निकाल कर देख लेंगे तो वो सैंपल हुआ, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। मगर हर बार हर जगह पर सैंपलिंग इज नॉट पॉसिबल। इफ आई वांट टू परचेज 10,000 more than 1 ton kg of the wheat, then I don't take a sample and just saying that this is all the 1 ton kg wheat is there, yes, then purchase it. That at that time we cannot see the sample. So here the sampling is inevitable in the following situations. The situations is given here in which we cannot select a sample. We just have to say yes, okay, this is okay. We cannot select any sample from the population because sampling is inevitable in the following situation. What is the first situation?
the number of units in the population is very large. I told you that example. If I want to purchase one or more than 1 ton wheat, then I don't want to see that, just see the wheat and then say purchase it, nothing else. If the population is very large, then we cannot take a sample, or if we are taking a sample from them, then it is not an exact idea. If one more than 1 ton kg bag are there, and if I am taking only one from one bag, few wheats are there, that is not a particular exact sample for that particular whole large population, right? That's why it is not evitable, that is sampling is not evitable in this type of situation when the population is very large. Second point, units of the populations are spread over wide geographical area. अगर मेरे को स्टडी करनी है कि इंडिया में से अच्छे अच्छे एमबीए कहां से मिलेंगे, इंडिया में से बहुत सारे आईएम में से तो मिलेंगे, आईएम में है, मगर आईएम में भी कितनी भी इंस्टीट्यूट्स है, कितनी सारी इंस्टीट्यूट है जिसमें आईएम अलग अलग जगह पर है, वहां से भी अच्छे अच्छे मतलब स्कॉलर स्टूडेंट्स जो एमबीए के हैं वो मेरे को कहां से मिलेंगे। तो अगर मैं वहां पर हर कॉलेज में जाऊंगा, आईएम की या फिर एमबीए की जितनी भी कॉलेज है वहां पे मैं जाऊंगा, वहां पर जाकर वहां के जो भी बच्चे हैं उसमें से थोड़े दो अगर अच्छे हैं जो रैंकर है 1 2 3 वो सभी में, सभी इंडिया के सभी गांव में से या फिर शहर में से या फिर स्टेट में से अलग अलग जितनी भी एमबीए की जो कॉलेजेस है वहां से मैं सिलेक्ट करूंगा। दैट इज कॉल्ड हियर the sampling. Units of the population are spread over wide geographical area. पूरे इंडिया में से अगर मैं ये सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं ये सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, वहां से हम और जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमबीए स्टूडेंट्स, दैट इज population is very large as well as it is also situated in wide geographical area. एक जगह पर है तो हम वहां से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, देखो चलो अगर आई वांट टू परचेज वन गेम फ्रॉम ऑल द गेम्स हियर, देन आई एम सीइंग ऑल द गेम्स एट वन प्लेस, राइट, एंड देन आई एम सिलेक्टिंग दैट मीन्स हियर इट इज अ वेरी इजी सैम्पलिंग, बट द population, the units of the population is not at one place, it is spread over wide geographical area, then we cannot select the sample from it. That means sampling is inevitable. Okay, that is the second situation. Third situation, the units under the inquiry are to be destroyed. जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, जिसका हम सैंपल ले रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब क्या, when inspection of the units is destructive in nature, that is inquiry of life of electric bulb, जिसका भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो अगर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, सिलेक्शन के टाइम की अगर वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो वो उसका हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, राइट, मीन्स व्हाट, द एग्जांपल इज गिवन when the inspection of units is descriptive in nature, example inquiry of life of electric bulb, अगर हमने कोई बल्ब लिया है और उसकी लाइफ कितनी है, अगर वो हमको सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, कोई भी एक बल्ब लेंगे, उसको एक स्टार वहां पे प्लग में लगा देंगे और कब तक चलता है वो पहले देखेंगे, कब तक चलता है मतलब क्या हुआ, वो स्टार्ट हुआ और जब खत्म होगा 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 50 दिन या 3-4 महीने के बाद अगर वो डिफ्यूज हो गया और वो लाइट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स द लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हाट मीन्स ऑफ दैट, अगर उसका हमको सैंपल सर्वे करना है तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक हमको उसकी लाइफ इन अर्थ पता नहीं चलेगी, तो उसमें हम सैंपल कैसे लेंगे, इतने सारे बल्ब है, इतने सारे बल्ब में से सभी बल्ब की लाइफ कितनी होगी, किसी की बहुत ज्यादा होगी, मतलब किसी बल्ब की लाइफ 1 साल भी हो सकती है, किसी बल्ब की लाइफ 1 दिन भी हो सकती है और किसी बल्ब की लाइफ 2-3 साल भी हो सकती है। So at that time, at that point, we cannot make a sample, we cannot take a sample because sampling is inevitable. Again I am reading that the units under the inquiry are to be destroyed.
अगर जो हम जिसकी भी इंक्वायरी करेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सैंपल जिसका भी लेना है, जिसका भी सैंपल हम लेंगे वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तभी हम उसका सैंपल ले सकते हैं। तो वो उसमें हम सैंपल नहीं ले सकते, क्योंकि जितने भी सैंपल लेंगे वो तो निकल जाएंगे। पॉपुलेशन में से किसके सैंपल लेंगे, किस क्राइटेरिया पे कि उसकी लाइफ कितनी है, मगर उसकी लाइफ खत्म होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि उसकी लाइफ इतनी है, तो वो तो खत्म हो गया, उसके बेस पर दूसरे की लाइफ कैसे कंफर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स हियर whenever the goods are destroyed at the time of sampling, that means at that time you cannot take a sample is inevitable। जिसका भी हम सैंपल लेने जाए उसकी लाइफ वहां पे ही खत्म हो जाती है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां पे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका सैंपल लेने का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। हमको दूसरे का सैंपल लेंगे, दूसरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तीसरे का सैंपल लेंगे, तीसरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मगर मतलब पूरा पॉपुलेशन जितने भी बल्ब है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मगर हमको एग्जैक्ट लाइफ पता नहीं चलेगी, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। अगर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ दी हुई है, see one person, one male or one female person in India, the life of the sample survey of the life of one person, one male person or one female person in India, that is also the example। हम उसका सर्वे नहीं कर सकते, हम उसका सैंपलिंग नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी लाइफ कितनी है वो तो पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। मतलब जब वो चला जाएगा तभी पता चलेगा कि इतने साल वो जिया, ठीक है, और उसके बाद दूसरे की लाइफ उसके बेस पर फिक्स होगी नहीं। नो, दैट मीन्स व्हाट हियर, sampling is inevitable in this type of population or in this type of survey। just we have to make an ideas about that, we have to just select। अगर हमने करना है इसको सैंपलिंग भी करना है तो हो सकता है कैसे, एक बल्ब लिया, एक बल्ब पूरा डिस्ट्रॉय हुआ तब तक हमने देख लिया, और उसके बेस पर हमको सबका ऐसे एज्यूम करना है। सी इट इज नॉट कंपल्सरी, इट वी हैव टू जस्ट एज्यूम दैट the life of all the bulbs are so and so, or the life of the one female is or one male is so and so। we just have to assume because it is not a perfect sampling, okay। so here the sampling is inevitable in this case। and the fourth point, limited availability of the resources like time, money and experts for the conducting an inquiry। सैंपल कौन लेगा, सैंपल लेने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। कौन सा पहले, तो पॉपुलेशन, कौन सा पहले सर्वे करना है वो पहले फिक्स करेंगे। सर्वे करने के लिए पॉपुलेशन कहां से लेना है वो फिक्स करेंगे। पॉपुलेशन लेने के बाद वहां से कौन से क्राइटेरिया के बेस पर सैंपल लेंगे वो सिलेक्ट करेंगे। वो करने के लिए पहले तो सबको पूरा बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, राइट। देन मनी, उसको भी खर्चे करने पड़ेंगे, तो खर्चे के लिए मनी चाहिए। और ये करने के बाद भी अगर हमको एक्सपर्ट नहीं मिला, एक्सपर्ट मतलब उसका पॉपुलेशन सिलेक्ट करने के लिए और पॉपुलेशन में से जो सैंपल सिलेक्ट करने के लिए जो चाहिए वो कोई एक्सपर्ट ही होना चाहिए, तो ही एक्चुअल सैंपलिंग हो सकता है। तो वो एक्सपर्ट अगर हमको नहीं मिलेगा तो ये सैंपल हम कर सकते, सैंपलिंग हम नहीं कर सकते, राइट। आप अपनी डे टू डे लाइफ में जा रहे हो, मगर आप एक्सपर्ट हो। आप अगर कोई सब्जी मंडी खरीदने जा रहे हो तो मगर आप परचेज के लिए एक्सपर्ट हो तो ही अच्छी सब्जी आएगी, तो ही अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स घर में आएंगे। अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो ऐसे वैसा कुछ भी आपका घर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज एक्सपर्ट। नाउ इफ आई एम पेइंग मोर देन रेगुलर प्राइस, मैं अगर मेरे को पता नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं ज्यादा भी पे कर सकता हूं। दैट मीन्स मनी ऑल्सो एंड टाइम। अगर मेरे को सिलेक्ट करना नहीं आता है तो मैं टाइम वेस्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, बहुत सारी शॉप होगी, सब शॉप में मैं जाऊंगा और सब शॉप में जाकर मैं टाइम वेस्ट करूंगा कि मैंने ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। मतलब वो टाइम, मनी एंड एक्सपर्ट, इफ 3 आर नॉट अवेलेबल then also sampling is not possible, sampling is inevitable। so in these type of 4 situations the sampling are inevitable। so please read that first 4 points, then we will discuss our next topic, next point or next paragraph। please first read that 4 situations and remember that, and also write in your fair book। please write 4 sampling is inevitable in the following situations। you have to write down that 4 situations in your fair book। read that and write that।
Okay, now see that generally the population inquiry is undertaken according to the constitutions and legal provisions and for the administrative reasons as well. Population inquiry हम हर बार अपनी डे टू डे लाइफ में तो कर ही रहे, मगर population inquiry sometimes it is compulsory undertaken according to the constitutional or and legal provisions. अगर गवर्नमेंट ने बोला है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने बोला है, अगर लीगल प्रोविजंस है तो हमको वो पॉपुलेशन इंक्वायरी करनी पड़ती है. सी द सेंसस सर्वे हियर, द पॉपुलेशन सर्वे, दैट मींस व्हाट, अगर हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल प्रोविजंस में हमको लिखा है कि भाई हमारे हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, वो हमको दिखाना है, गवर्नमेंट को दिखाना है, पब्लिक को दिखाना है, साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड को भी दिखाना है कि हमारा पॉपुलेशन इतना है, हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है या फिर छोटा हुआ है, मतलब कम हो चुका है, वो हमको बताना है. इसलिए दैट इज कॉल्ड जनरली द पॉपुलेशन इंक्वायरी इज अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल और द लीगल प्रोविजंस और एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एज वेल. इवन इन सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन इंक्वायरी इज फिजिबल, अगर हम बोल सकते हैं कि भाई पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं सभी का हमको इंक्वायरी करना है, राइट, इज फिजिबल, बट preference is given to the sample inquiry because the population inquiries involves more time, more money and manpower. I told you here in the situations inevitable sample inevitable situations is here when the population is very large, when the population is spread over different geographical area and experts are also not there, then we cannot take a sample from the population. But at the time of populations here we need manpower, money power and expert, okay, and time also, right? So here if population inquiry is feasible, then also the preference is given to sample inquiry because it save our time, it save our money as well as manpower also. See, moreover a large number of errors creep into the population inquiry. अगर हम population inquiry करने जाएंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स आएगी. सैंपल इंक्वायरी में बहुत मिस्टेक, क्योंकि सैंपल मतलब छोटा है, थोड़े बहुत की इंक्वायरी करनी है, थोड़े की इंक्वायरी हम डिटेल में कर सकते हैं और पॉपुलेशन में सभी की इंक्वायरी करनी है तो वो एक लिमिट आ जाएगी. उस लिमिट के बाद हम वो इंक्वायरी एग्जैक्टली जो चाहिए वो हम नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इन द रिमेनिंग क्राइटेरिया, in the remaining timing the inquiry must get some errors. उसमें कोई error रह जाएगी, कोई भी mistake रह जाएगी, right? So here the population, moreover the large number of errors creep in the population inquiry because the task of organizing population inquiry is extensive and complicated. It is also extensive, बहुत लंबा चलेगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सभी की इंक्वायरी करने में हमको टाइम लगता है और टाइम के बाद में एक टाइम के बाद हमारी लिमिट खत्म हो जाती है तो बाद में जो हो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, राइट? सो पॉपुलेशन इंक्वायरी इज नॉट प्रिफरेबल. सैंपल इंक्वायरी, इफ द पॉपुलेशन इंक्वायरी इज फिजिबल देन आल्सो इट इज प्रिफरेबल दैट हियर वी हैव टू टेक अ सैंपल इंक्वायरी इन डे टू डे लाइफ. अगर हमको 1 किलो परचेज करना है, वहां से कोई सब्जी मंडी की हम भी बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हमको परचेज करना है तो हम देख लेंगे कि भाई ये चलो इतने सारे जो अच्छे हैं उसमें से आप 2 किलो निकाल दो, इसमें से आप जो भी सभी अच्छे हैं इसमें से कोई भी 2 किलो निकाल दो. मतलब हमको पूरा पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है. तो मैं क्या बोलूंगा कि ये साइड को जो दिख रहा है वो अच्छा है, ये साइड का वो अच्छा नहीं है, तो इसमें से मेरे को 2 किलो निकाल के दे दो. दैट मीन्स हियर द पॉपुलेशन इंक्वायरी इज here feasible. We are not taking a population inquiry, we are here we are preferable the sample inquiry. Okay, see the next paragraph. The main objective of sampling. What is the main objective of sampling? Write down. If the question asks that what is the main objective of sampling, this is the answer. The main objective of sampling is to draw inference about the characteristics of the population on the basis of the sum of a sample inquiry. See, पॉपुलेशन इंक्वायरी में हमने क्या एग्जांपल लिया था कि भाई एक स्कूल, कोई भी पर्टिकुलर एक स्कूल ले लो, उसमें से 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चे का हमको स्टडी करना है
तो 11-12 स्टैंडर्ड के एक स्कूल के सभी बच्चे हुआ, वो क्या हुआ, हमारा पॉपुलेशन हुआ। उसमें से वीकर स्टूडेंट्स कितने हैं, 30%, एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, 40% या 50%, और क्लेवर स्टूडेंट्स कितने हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स कितने हैं, 20%. So that is 20%. If I want to take an example of highest clever students, that is 20%. तो उस स्कूल का हम एक क्राइटेरिया निकाल सकते हैं, स्कूल वाइज क्राइटेरिया भी निकाल सकते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम ये बोलेंगे कि ये स्कूल में 20% बच्चे अच्छे हैं, दूसरी स्कूल में 30% बच्चे अच्छे हैं, तीसरी स्कूल में 25% बच्चे अच्छे हैं, मतलब अच्छा सा रिजल्ट ला सकते हैं, ऐसे बच्चे इतने इतने हैं, right? So here the main objective of sampling is to draw the inference about the characteristics of the population. जो भी पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल इंक्वायरी कि भाई इसमें क्या है। मैंने अभी जो वीट की बात की थी, एक बैग में बहुत सारे 15 किलो 50 किलो वीट है, उसमें से 2-3 पीस या फिर 10-15 पीस निकाल कर मैं देख लेता हूं। That means what? This is the population and this bag is the population and these wheats are 15-20 wheats are what is your sample. But वो सैंपल के बेस पर हम पूरी बैग में कैसे वीट है उसका हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स करते हैं, मतलब अच्छे हैं, बुरे हैं, इतने अच्छे इतने बुरे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे पॉपुलेशन का है वो हम सैंपल इंक्वायरी के साथ वो फिक्स कर सकते हैं, राइट? सो सैंपल इंक्वायरी इज here important. Again, the main objective of the sampling is to draw the inference about the characteristics of the population on the basis of the sample inquiry. The measures are such as mean, standard deviation, etc. calculated from the numerical data obtained from the sample units are called sample statistics. See, हमने mean लिया था, standard deviation लिया था, वो हम पढ़े थे chapter number 3, chapter number 5. That is also sample statistics. जो कोई डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा दिया हुआ है या फिर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में से हमको अगर मीन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, दैट इज आल्सो सैंपल स्टैटिस्टिक्स। पूरे डेटा में से उसका एवरेज क्या है, दैट इज मीन। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दैट इज एस। पूरे डेटा में से कोई एक पॉइंट और कोई एक क्राइटेरिया के बेस पर अगर हम मीन फाइंड आउट करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज आल्सो सैंपल स्टैटिस्टिक्स। वो स्टैटिस्टिक्स है, साथ में सैंपल तो है ही, क्योंकि पूरे डेटा में से पूरे डेटा का यूज करेंगे और निकालेंगे क्या, ओनली वन थिंग दैट इज मीन, ओनली वन थिंग दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। ऑल दीज मेजर्स फॉर पॉपुलेशंस डेटा आर कॉल्ड पैरामीटर्स। अंडरलाइन the definition of parameters. All these measures, that is mean, median, mode, all these measures for population data are called the parameters. It is the name of the measures is now the parameters for the population, right? Okay, see, read that 2 paragraph. Then we will discuss about the characteristics of an ideal sampling. See, it's an important point. Characteristics of an ideal sampling is an important point, and it will ask in 3 to 4 marks, right? So please mark it as an important or most time question and see the exercise. Section A and B are the important. So first of all, you have to write the answer in your exercise book. See, in your example book, you have to write down meaning of population and sample, then population inquiry and sample inquiry, and all the examples for that. Population, sample, population inquiry and sample inquiry. Then you have to write down the situations, 4 situations in which the sampling is inevitable, and then write down the
sample statistics for meaning as well as the parameters meaning, right? What is parameters and what is sample statistics? That all these things you have to write down in your example book and in your exercise book. Your homework is you have to write down exercise 7 section A and B. And if you have any doubts in section A and B, then ask me in our Zoom lecture. So please join our Zoom lecture because we are discussing all your doubts here in our Zoom lecture. So here the characteristics of an ideal sample is most important topic. Please mark it as an important, and we will discuss in detail in our next session. So here I am complete my lecture. So thank you class. Have a nice day. Bye bye.